बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। पिछले लेक्चर तक हम लोग नाइव बेस को देख चुके हैं और उसकी अंडरलाइंग अजम्पशंस को देख चुके हैं। ये देख चुके हैं कि उसको नाइव क्यों कहते हैं। वी हैव गॉन थ्रू एग्जांपल्स, वी हैव सीन हाउ इट वर्क्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखना है वो ये है कि अभी तक नाइव बेस एल्गोरिदम हमें किसी हद तक कंस्ट्रेंड फील होता है बिकॉज इसके अंदर हमने सिर्फ डिस्क्रीट फीचर्स को देखा है, ऐसी फीचर्स जो कि काउंट किए जा सकें, काउंटेबल चीज़ें। अभी तक हमने कंटिन्यूस वैल्यूड फीचर्स को नहीं देखा कि उनके साथ नाइव बेस एल्गोरिदम कैसे डील करता है। तो दैट्स द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। इस वीडियो के लिए हम लोग ये दो मेन रेफरेंसेस फॉलो कर रहे होंगे। एक्चुअली I'll be taking some examples from these two sources। ये जो पहला है ये विक्टर लेब्रेंको का यूट्यूब का चैनल है। विक्टर लेब्रेंको इज़ अ प्रोफेसर ऑफ मशीन लर्निंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। इनका चैनल मैंने इससे पहले भी इसका जिक्र किया है। ही एक्सप्लेन्स थिंग्स वेरी नाइसली इन वेरी ब्रीफ वीडियोस। तो इनकी जो वीडियोस हैं वो 3, 4, 5 मिनट की होती हैं। So I would highly recommend that you should refer to the original source, go to his channel and like watch his videos, especially जब आप हमारे lecture सुन चुके हों and you have some time or you want to fill some more gaps, कुछ चीज़ें जो हमने मिस कर दी हों, तो उसके लिए you can definitely go there and watch his videos. सेकंड जो यहाँ पर सोर्स है स्टैट क्वेस्ट का, इससे मैं कुछ डायरेक्टली एग्जांपल्स यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, एंड आई हैव referred to this on the actual slides as well. सो दिस इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग चैनल जिसके ऊपर ये बहुत सिंपल करके चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। एट मैनी टाइम्स ही डजंट इवन initially touch the mathematical details before giving you the intuition. So it's a great channel, लेकिन at the same time you can really use it for getting those deeper insights into what's going on at the back of the algorithms. तो ये दोनों sources हैं मेन जिसे हम यूज़ कर रहे होंगे। There are other sources obviously, वो जहाँ जहाँ आएंगे वो उन slides के ऊपर mention हुए हुए होंगे। Alright जी, so let's begin। जो हमारा मेन क्वेश्चन है इस वीडियो में वो ये है कि अभी तक हमने वो सारे फीचर्स देखे हैं, ऑल्दो वी नेवर सेड इट दैट एक्सप्लिसिटली इन एनी ऑफ द प्रीवियस वीडियोस, लेकिन अभी तक हमने जितनी भी फीचर्स की एग्जांपल्स देखी हैं वो सब काउंटेबल थी। कहीं वर्ड्स थे जिन्हें हम काउंट कर रहे थे, कहीं इवेंट्स थे जिन्हें हम काउंट कर रहे थे, ये चीज़ कितनी दफ़ा हुई है, ये चीज़ कितनी दफ़ा नहीं हुई है। वर्ड स्पैम के अंदर वर्ड विन कितनी दफ़ा आया है, यानी स्पैमी वर्ड्स कितनी दफ़ा आए हैं, नॉन स्पैमी वर्ड्स कितनी दफ़ा आए हैं। सो वी वर आस्किंग दोज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सो ऑल ऑफ दीज were discrete valued features, and obviously ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक पूरा एल्गोरिदम ऐसा बना रहे हों जो सिर्फ डिस्क्रीट के लिए चल रहा हो और कंटिन्यूस में ना चल रहा हो। दैट वुड बी अ बिग शॉर्ट कमिंग, और फिर जो है वो इस एल्गोरिदम की ऑब्वियसली अफादियत कम हो जाती। सो वी नाउ हैव दिस बिग क्वेश्चन दैट हाउ डू वी डील with the real valued features, real valued input. So for example, like heights and ages and other features. Like for example, आपसे मैं ये कहूँ कि you predict whether a particular subject is an adult or a child given their height। हाइट से प्रेडिक्ट करना है कि बच्चा है कि बड़ा है। अब इस प्रेडिक्शन के अंदर अगर हम उसी ट्रेडिशनल तरीके से चलें और ये कहें कि जी मेरा जो पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर मैंने लेट्स से आई टुक अ लार्ज सैम्पल सेट जिसके अंदर मेरे पास एडल्ट्स भी थे और चिल्ड्रन भी थे, मैंने उनकी हाइट्स नापी और अपने पास लिख ली। सो आई हैव पीपल हुज हाइट इज़ लाइक 6 feet 6 feet 1 inches, 6 feet 1.5 inches, 5 feet 5 feet 5 inches, 5 feet 8 inches, 5 feet 9 inches and so on and so forth। सारी हाइट्स मेरे पास हैं, एंड ऑब्वियसली दीज आर रियल नंबर्स। लाइक ये अपने स्केल के ऊपर बहुत प्रिसाइज भी हो सकती हैं, लाइक एग्जैक्टली आई डोंट नो x centimeters or x millimeters or y millimeters and so on। So height could be very precise as well। Now when I get a new टेस्ट डेटा पॉइंट जिसके बारे में मैंने ये प्रिडिक्ट करना है कि ये एडल्ट है ये चाइल्ड है, तो द प्रॉब्लम इज कि इफ़ आई गो बैक एंड यूज़ द सेम मैकेनिज्म जो काउंटिंग का मैकेनिज्म हम सीख कर आए हैं, एंड इफ आई जस्ट काउंट कीजिए मेरा जो सब्जेक्ट है जो नया टेस्ट डेटा पॉइंट आया है उसकी हाइट फॉर एग्जांपल है आई डोंट नो 183 inches, whatever। I don't even know whether that makes sense, but yeah, let's say 183 inches का एक मेरे पास स्पेसिफिन है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि एडल्ट है या चाइल्ड है या एलियन है। तो okay, so I just take this height, and now if I go back and count the number of people who had exactly this much height, it doesn't make sense because this height could be like 183.2798456। it could be like very precise, और हो सकता है कि जब मैं काउंट करूं तो मुझे एक भी एग्जांपल एग्जैक्टली उस हाइट की ना मिले। however
इसकी हाइट बहुत करीब है से एनीवन जिसकी हाइट 184 है या 182 है या 180 है या इवन 185 है, उस सबसे बहुत करीब है. तो देयर इज अ नोशन हियर फॉर कंटिन्यूस डेटा कि जहाँ पर करीब के डेटा पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और खाली डिस्क्रीट वैल्यूज़ को आपने काउंट नहीं करना होता. सो काउंटेबिलिटी से हम हट रहे हैं, राइट. सो जो काम हम अब तक करते आ रहे थे, फॉर एग्जांपल ये स्पैम के केस के अंदर, कि वी जस्ट हैव दीज वर्ड्स एंड वी हैव, एज वी सेड, वी हैव ऑन दिस एक्सेस वी हैव ऑल द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज. तो अब ये सारे वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज के लिए वी हैड दीज एग्जैक्ट काउंट्स. वी न्यू कि ये जो वर्ड्स हैं ये कितनी दफ़ा अकर कर रहे हैं. सो ये 7 टाइम्स अकर कर रहा है, ये 5 टाइम्स अकर कर रहा है, ये वाला 3 टाइम्स अकर कर रहा है, ये वाला 2 टाइम्स अकर कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हमारे पास ये एग्जैक्ट काउंट्स थे, एंड वी कुड जस्ट गो इन आवर कॉर्पस एंड वी कुड काउंट दीज वर्ड्स. ठीक है, इट मेड सेंस. हाउएवर जब हाइट्स हमारे पास आई, तो हाइट्स आर लाइक दिस. सो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ एज्यूम करता हूँ कि ये आई डोंट नो 4 फीट 5 इंचेस से लेकर 4 फीट 5 इंचेस से लेकर मेरे पास आई डोंट नो 6 फीट 7 इंचेस तक की हाइट्स हैं. ठीक है, सो देर आर सर्टन individuals who are very tall, there are certain individuals who are very short, and then there are many individuals towards the center जो कि इस हाइट के एवरेज हाइट के अराउंड लाई कर रहे हैं. और मैं एज्यूम करता हूँ ये 5 फीट 8 इंचेस और वट एवर, या 5 फीट 6 इंचेस है जो एवरेज हाइट है इसमें. सो नाउ द प्रॉब्लम है कि अगर मेरे पास एक नया टेस्ट डेटा पॉइंट आता है, व्हाट डू आई से अबाउट दिस, बिकॉज इस एग्जैक्ट हाइट के ऊपर तो हो सकता है कोई भी ना हो, लेकिन इसके करीब करीब मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत से पॉइंट्स हैं. देन हाउ डू आई डील विद दीज फीचर्स in a Bayesian environment? How do we deal with this with naive Bayes? There are multiple ways of going about this. अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और वाजे कर दूँ कि पहले हम बात कर रहे थे अब तक all discrete values features की, अभी हम बात कर रहे हैं all real valued features की. लेकिन एक क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली ये भी आएगा कि जो भी तरीके हम ये निकालेंगे, what do we do when we have mixed features? Like we have a feature which is countable and another feature which is continuous, which is not countable, which is real valued. तो जब ये mixed features होंगे तो क्या करना है? अब हम पहले ये देख लेते हैं कि हम continuous features को deal कैसे करते हैं, then we'll see कि mixed features के बारे में क्या किया जा सकता है. So here is the first method. It's actually the simpler method. So all what I've done here is I've created these bins. So for example ये first bin है जो 4.5 inches से लेकर 4.6 inches तक का है, and this is like the next bin is 4.6 से 4.7 inches का. So let's say 1 इंच का ये bin बना हुआ है, या 2 इंच का bin बना हुआ है, ये 3 इंचेस का bins बने हुए, and so on and so forth. And now whichever individuals fit into these bins, मैंने उनको इन बिन्स के अंदर फिल कर दिया. सो फॉर एग्जांपल ये अगर मेरा बिन जो है ये 5 फीट 5 इंचेस से 5 फीट 8 इंचेस का है, तो ये सब इंडिविजुअल्स जो हैं ये इसके अंदर ये वो हैं जिनकी हाइट्स 5 फीट 8 इंचेस से लेकर 5 फीट 5 इंचेस से लेकर 5 फीट 8 इंचेस तक है. ठीक है, आई होप दिस इज सिंपल. एंड नाउ दिस डेटा हैज बिकम काउंटेबल. सो नाउ इफ आई हैव अ न्यू टेस्ट डेटा पॉइंट, मैं उसको भी इसी में से किसी बिन में डालूंगा बेस्ड ऑन उन्हीं लिमिट्स के जो डिफाइन हुई हुई हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है और लेस देन क्या है. ऑब्वियसली आप एक साइड पे ऐड कर सकते हैं ये दरम्यान वाली चीज़ को. तो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड अ ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन, नॉट लेस देन इक्वल टू. दोनों चीज़ें सब बिन्स के लिए डिफाइन इस तरह नहीं हो सकती. एक इक्वल टू होगी, एक क्लोज्ड होगा, एक ओपन होगा. सो नाउ let's say this is x. So अब मेरा जो टेस्ट डेटा पॉइंट आया वो जिस बिन में फिट आएगा, I'll just count the number of individuals in that bin and then the rest of it follows exactly as before. कि अब इस बिन को divided by the sum of the elements in all bins, वो मुझे उसी तरह की probabilities और likelihoods देना शुरू कर देगा जो मैंने उससे पहले सीखी हुई. राइट, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया. सो हमें हमारे सो बाय द वे इससे जो प्रॉब्लम होता है कंटिन्यूस वैल्यूड फीचर से, अगेन वो आगे जाकर जब एग्जांपल करेंगे देखेंगे भी कि वो मसला सिर्फ हमें लाइकलीहुड फाइंड करने में होता है. हमें वो मसला प्रायर्स में नहीं होता, सिर्फ लाइकलीहुड्स में आता है. क्योंकि ये प्रॉब्लम ये वाला जो है ये लाइकलीहुड का प्रॉब्लम है, ये प्रायर का प्रॉब्लम नहीं है. वो अभी हम देख लेते हैं. तो प्रायर्स वुड कम फ्रॉम एनीवेयर एंड वी हैव ऑलरेडी हैड सम डिस्कशन अराउंड दैट. अच्छा जनाब, तो पहला तरीका ये हो गया रियल वैल्यूड फीचर से डील करने का कि यू बिन. एंड नाउ एट दिस पॉइंट अगर मैं आपसे क्विकली ये कहूँ कि यू हैव मिक्स्ड फीचर्स, सो यू हैव सम कंटिन्यूअस फीचर्स एंड सम डिस्क्रीट वैल्यूड फीचर्स. अब क्या करें? तो इस मेथड के हिसाब से तो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि अपने सारे कंटिन्यूअस को भी आप डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लें एंड नाउ बिनिंग कर लें. सो यू डू योर binning and you bin and you convert everything into a discrete valued feature, and now all of your features are discrete values, so you're done.
ठीक है, सो एक तरीका ये हो गया मसला सॉल्व करने का कि वी जस्ट कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू अ रियल वैल्यूड फीचर, इनटू अ डिस्क्रीट वैल्यूड फीचर. नाउ लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम अगेन एंड लेट्स सी कि क्या हम इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं. अभी पिछली स्लाइड के ऊपर जो आपने बिनिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, अगर आपने गौर किया हो तो वो बहुत फेमिलियर अंदाज की डिस्ट्रीब्यूशन लग रही थी. And most of the features, real world features, have that kind of a distribution, and that's a normal distribution. So हम हमेशा ये कर सकते हैं कि we can use our data and we can try to fit a distribution on top of it. And one of the most common distributions that we try to fit on top of our data is the Gaussian distribution, is the normal distribution. And you know that your normal distribution is defined by two parameters. It's your mean and your variance, या mean या और आपका standard deviation, which is like just the sigma. यहाँ पे मैंने variance use किया हुआ है. So ये दो चीजें define करती हैं, your mean and your variance define your distribution. So this is your mean, and then your average spread from the mean is your variance. Like the average squared spread from the mean would be your variance. So now, just given our training data, we find out the mean of those training data points, where we have our sample size is n. So ये हमारा total training data है, and hi is the height of each individual जिनको हमने sample किया था, and this a indicates कि मैं adults की बात कर रहा हूँ. So the mean of the heights of adults is equal to the average 1 over n of, ये मैंने sum कर दिया सारी heights का. So ये मेरे पास mean आ गया मेरी population का, यानी मेरी test data का, training data का. And then for my training data, I also calculate the variance, which is just the difference, the spread, the dispersal of each height from the mean. ये जो mean अभी हमने यहाँ पे ढूंढा है, and we just square it, ताकि इस सबका जो है ये अब इसके तो अब आप माहिर हो चुके हैं ना कि हम स्क्वायर क्यों करते हैं, और सारी चीज़ों को एक ही पॉजिटिव के अंदर हम लाना चाह रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल ना करें. और ये एवरेज जो आपने स्क्वायर डिस्पर्सल सम निकाल लिया, इसको आपने एवरेज कर लिया. सो योर एवरेज स्क्वायर डिस्पर्सल, योर वेरिएंस. नाउ गिवन दीज टू, you can always define this Gaussian curve जो यहाँ पे बना हुआ है. By the way, जितने भी Gaussian curves आपको नजर आएंगे उनमें से ज़्यादातर मैंने हाथ से बनाए हुए हैं, तो इसलिए वो कच्चे पक्के ही Gaussian हैं, लेकिन बर्दाश्त कर लीजिएगा. I just drew them with this pen. All right जनाब, तो अब जब आपने distribution fit कर दी, now your task has become pretty simple. So आपने अपने training data को लिया, mean और स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन और वेरिएंस फाइंड आउट की, जिससे आपकी एक गाउसियन फिट हो गई उस ट्रेनिंग डेटा के ऊपर. एंड नाउ फॉर योर टेस्ट डेटा पॉइंट, all you need to do is you need to just read off the value कि इस particular, ये जो particular data point है ये कितना likely है. अच्छा, अब ये यहाँ बहुत ज़रूरी है, और मैं इस पर थोड़ी सी बात शायद आगे करूँगा भी, कि हम यहाँ पर अब likelihood ढूंढ रहे हैं. याद है ना, हमारा जो बेस के अंदर जिस चीज़ को हम ढूंढ भी रहे हैं वो हमारा likelihood function है, right? So how likely is as a particular, so for example अगर हम ये कह रहे हैं, हमारा जो बेस के अंदर जो question होता है, the probability of being adult, for example, so probability of let's say a given height. So probability of someone being an adult given the height is equal to the probability of height given that they are adult into the probability of adult over the probability of the height, right? और हमने ये कहा था कि ये हमारी एविडेंस है और ये हमारा प्रायर है और ये हमारी लाइकलीहुड है. ये जो लाइकलीहुड टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोबेबिलिटीज. इस पे हमने अगला जो हमारा लेक्चर है उसमें भी डिस्कशन होनी है और हम काफ़ी डेप्थ में जाएंगे, लेकिन मैं इसकी कुछ इंट्यूशन को यहाँ पर भी कवर करूँगा ताकि आपके जहन में बिल्कुल ये क्लियर हो कि प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं और लाइकलीहुड्स क्या होती हैं. व्हाट वी आर लुकिंग एट हियर इज नॉट एरिया अंडर द कर्व. इस डिस्ट्रीब्यूशन का हम एरिया अंडर द कर्व नहीं देखना चाह रहे फॉर दिस पॉइंट. वी वॉन्ट टू जस्ट फाइंड आउट कि इसकी ये वाली वैल्यू क्या है. We just want to read off the value here, and this is the likelihood. This is, so given this distribution, so given this data point, it's important that we say it like this. Given this data point, how likely is this distribution? How likely is this distribution which is based on this mu and this sigma square? ये डिस्ट्रीब्यूशन कितनी likely है, and that's the likelihood question, and what it gives you is a score, and these scores don't sum up to 1, so that's why we call it a likelihood. ठीक है जी, तो आपने ये find out कर लिया, and you read off this value, and whatever you read off from here you substitute here and you're done. So this is the second mechanism of dealing with real valued features. अच्छा,
अब जब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास एक रियल वैल्यूड फीचर है, लाइक हाइट है या वेट है या एज है, मैं एक दफ़ा क्विकली दोहरा देता हूँ, तो आप करेंगे ये कि आप अपने पूरे ट्रेनिंग डेटा को पकड़ के उसकी पॉपुलेशन का, उस यानी ट्रेनिंग डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस फाइंड करेंगे, जो डिफाइन कर देगा एक गाउसियन को। एंड नाउ फॉर योर टेस्ट डेटा पॉइंट यू विल जस्ट फिगर आउट द लाइकलीहुड ऑफ दैट डेटा पॉइंट विच इज जस्ट रीडिंग ऑफ द वैल्यू हियर, कि इस कर्व के ऊपर ये कहाँ पर लाई कर रहा है, वो वैल्यू आप रीड ऑफ करेंगे। एंड देन you will just fit it here and you're done। ये तो नीचे से वैसे ही निकल जाता है ना आग मैक्स के अंदर, आपको याद है, तो ये ऊपर वाली दो चीज़ें रह जाती हैं। और ये प्रायर जो है ये ढूंढना बड़ा आसान होगा। हमारे पास हमारे ट्रेनिंग डेटा के अंदर कितने एडल्ट्स थे और कितने चिल्ड्रन थे, वहाँ से ये बिल्कुल प्रायर उसी सिंपल तरीके से निकल सकता है। यू जस्ट डू अ काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ एडल्ट्स डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो लिहाजा जो चीज़ मिसिंग थी ये वाली, ये भी अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ओके, नाउ व्हाट डू वी डू इफ़ यू हैव मिक्स्ड फीचर्स, इफ़ यू हैव, जैसे हमने पिछली उसमें स्लाइड में कहा था ना कि आपके पास कुछ फीचर्स डिस्क्रीट हैं और कुछ कंटिन्यूस हैं। जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यू कैन जस्ट डील विद योर कंटिन्यूस फीचर्स यूजिंग गाउसियंस एंड यू कैन डील विद द डिस्क्रीट फीचर्स यूजिंग काउंट्स एंड यू कैन मिक्स देम अप। बिकॉज हम आग मैक्स में इंटरेस्टेड हैं, ये मिक्सिंग हमारे रिजल्ट्स को ख़राब नहीं करती। एंड दैट्स द फन विद द नाइव बेस। यू कैन हैव मिक्स्ड फीचर्स, यू कैन हैव सम रियल वैल्यूड फीचर्स एंड सम डिस्क्रीट वैल्यूड फीचर्स, एंड यू कैन जस्ट कैलकुलेट the likelihoods of the discrete values of the continuous valued features using, let's say, these Gaussians, and you can just count for the discrete ones and you can then just mix up the likelihoods उसी तरह से वही इंडिपेंडेंस के assumption के साथ, and you'll be fine। ठीक है, तो ये एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस पूरी चीज़ का। either you convert everything to discrete or you just deal with the continuous ones like continuous ones and discrete ones like discrete ones। अच्छा जनाब, थोड़ी सी बात इसकी कर लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑब्वियसली इस पूरी रिवीजन का वक्त नहीं है। आप में से ज़्यादातर तो ऑलरेडी इस चीज़ पे क्लियर होंगे, आपने पहले पढ़ी हुई होंगी ये चीज़ें, लेकिन यू कैन ऑलवेज गो एंड विजिट दिस स्टैट क्वेस्ट ऑन प्रोबेबिलिटी वर्सेस लाइकलीहुड, और यू कुड रीड दिस टॉपिक विच इज़ रिटन वेरी नाइसली, क्योंकि ये एक ऐसा एक मिस्टेक है, या मैं इसको यूँ कहूँगा कि एक ऐसा मिसकंसेप्शंस होती हैं हमारे जहन में कि हम बहुत क्लियर नहीं होते कि लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। तो वो हमारे जहन में क्लियर होना ज़रूरी है जब आप स्पेशली बेजियन जो है वो प्रोसेसेस से गुजर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। प्रोबेबिलिटीज़, आपको अगर याद हो, बिल्कुल शुरू में जब मैंने प्रोबेबिलिटी रिवाइज शुरू की थी, तो पहली जो एग्जांपल थी जो वो खालिद आज़ाद की बुक से थी, उसके अंदर हमने ये बात कही थी कि वो एक एनिमल है जिसके फुटप्रिंट्स आपको मालूम है या आपने वो एनिमल देखा हुआ है, वो दोनों का डिफरेंस याद है, ये वही डिफरेंस यहाँ आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी अटैचेस to possible results and likelihood attaches to hypotheses. So basically probability के case में you already know that you want to predict how likely is a particular outcome, whereas in likelihood how probable is a particular outcome, sorry, I should now use precise terms. So probability में you already know the distribution and you want to find out how probable is a particular outcome. फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, लाइकलीहुड के केस में उल्टा है। लाइकलीहुड के केस में आउटकम पहले मालूम है, हमें पहले से पता है कि लेट से ये चीज़ हो चुकी है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि गिवन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली आउटकम जो है ये कितनी लाइकली है। सो बेसिकली हम उस डिस्ट्रीब्यूशन की लाइकलीहुड ढूंढ रहे होते हैं, रादर देन कि हम उस पर्टिकुलर आउटकम की लाइकलीहुड ढूंढें। अगर ये बात कंफ्यूजिंग लगी है तो 2 सेकंड सिर्फ ठहर जाएं, और ये आ गई ये वाली गुफ्तगू। पहले लेट्स लुक एट प्रोबेबिलिटीज, एंड दिस इज बेसिकली फ्रॉम द स्टैट क्वेस्ट। लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास वेट्स हैं किसी भी चीज़ के, माइस के वेट्स हैं ये हमारे पास, या इंसानों के वेट्स हैं, वटेवर। इंसानों के तो वेट्स ग्राम्स में 24 ग्राम से 40 ग्राम तक नहीं हो सकते, तो लेट्स कीप इट माइस। सो ये चूहों के वेट्स हैं हमारे पास, और आई एम एज्यूमिंग दैट दी पूरे के पूरे जो हमारा ट्रेनिंग डेटा था, जब हमने उसमें सारे चूहे वे किए, तो जो उनकी एवरेज आई, जो उनका मीन आया, वो 32 ग्राम्स आया, और जो उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आई वो 2.5 ग्राम्स आई। ठीक है, now that we know this distribution, the probability question is, for example, what's the probability कि एक randomly selected individual mouse का जो वजन है वो 32 ग्राम से लेकर 34 ग्राम के बीच में हो। Now that's a probability question। ये आंसर कैसे होगा? And given this distribution given है, और हम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक रैंडमली सिलेक्टेड चूहे का जो वजन है वो इन लिमिट्स के बीच में हो। एंड द वे यू फाइंड आउट इज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका 34 है, एंड लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस हियर, एंड ऑल यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट इज टू जस्ट find out the area under the curve।
So this area under the curve is now your probability, which comes out to be 0.29 given this mu and sigma. ये आपकी probability होगी कि एक randomly selected जो है वो इन दो limits के बीच में होगा. We can also ask a different question. We can ask a question like this. Let me just rub off the previous one. So here's another question. So what's the probability कि एक randomly selected individual mouse का जो वजन है it would be greater than 34 grams given this curve जो कि ऊपर हमारे पास बना हुआ है. How would you find that out? You would just let's say this is your 34 line, and then you would just sum up everything under this curve, and I'm trying to fill this out nicely. So this area under the curve now, basically ये भी इसमें शामिल है. So this area under the curve now would give you the probability कि एक randomly selected mouse जो है जो इस population से आ रहा है उसका वजन इतना होगा, यानी greater than 34 होगा. Questions about probabilities. So in probability, essentially what you're saying is you're asking about the probability of data, how probable is a particular data या outcome given a distribution. So fixed क्या चीज है यहाँ पर? So this is fixed. This is fixed. Your distribution is fixed. And you're asking questions about data. और data अभी हमारे पास आया नहीं है. ये हम data आने से पहले ये सवाल पूछ रहे हैं. हम ये कह रहे हैं ये वाली outcome कितनी probable है, ये वाली outcome कितनी probable है, ये वाली outcome कितनी probable है. ठीक है? That's the probability question. Whereas, and obviously the area under the curve sums to 1. We know that. So for this probability density function जो ऊपर बना हुआ है, मैं जिस तरफ नहीं गुफ्तगू को ले जाना चाह रहा वो एक डिटेल डिस्कशन ऑफ probability mass functions and probability density functions, मैं उस तरफ फिलहाल नहीं जाना चाह रहा. किसी और वन आई नो कि आप ये सब कुछ पढ़ के आए हैं, एंड टू अगर कहीं ज़रूरत हुई तो हम उतनी दोबारा से उस चीज़ को देखेंगे, एंड प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स जो हमारा इससे अगली सीरीज़ आ रही है उसके अंदर जो है वो शायद हम किसी हद तक इसको डिस्कस करेंगे भी, जहाँ पे हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस भी देखेंगे. बट फॉर नाउ दिस अमाउंट ऑफ detail should be enough. अच्छा जी, now let's look at a different question. Again वही distribution की हुई है. However, we have a particular specimen that we have already weighed. So हमने एक माउस को ऑलरेडी उसका वजन कर लिया और वो वजन निकला 34 ग्राम्स. ठीक है, एक माउस वजन कर लिया या थोड़े से माउस वजन कर लिए, तो हमने हमारे पास वेट ऑलरेडी आ चुका है. So now we have this subject and it weighs 34 grams. Now carefully observe, हम question क्या पूछ रहे हैं? The question is, given that the weight of our individual is 34 grams, how likely is this distribution? बस ये फर्क है. Given that the weight is 34 grams, वजन already किया हुआ, how likely is this distribution? क्या likelihood है इस distribution की कि जिसके अंदर 32 के ऊपर mean हो और standard deviation 2.5 हो? और वो likelihood हमें मिलेगी कहाँ से? We'll just read it off from here, and it comes out to be 0.12. Now जो likelihood जिस काम के लिए यूज की जाती है वो ये की जाती है कि अच्छा, let's say we have another distribution, जिस distribution का जो mean है, and let me actually try to draw this second distribution. I hope कि I've been able to do a good enough job. So इस distribution का जो mean है वो 34 पर है. Let's say we have another distribution, and for this new distribution we ask the same question. So we say, given the mu is 34 and the standard deviation is 2.5, हमारा given कि हमारे subject का weight 34 है, how likely is it? And we find it's 0.16 क्योंकि उसका mean ही यहाँ पर है. That means कि ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ज़्यादा लाइकली है एज अपोज टू द फर्स्ट वन. याद है? अब आपको वो गुफ्तगू सारी याद आई जहां हमने कहा था कि हम एक चीज़ करते हैं जिसको मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन कहते हैं, जहां पर हम अपने जो ट्रेनिंग डेटा है उसकी लाइकलीहुड को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं. सो वी ट्राई टू फाइंड अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट फिट्स आर ट्रेनिंग डेटा. तो बेसिकली ये वो वाला काम, वो लाइकलीहुड जो है ना, ये उसी का गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है. सो नाउ यू शुड बी वेरी क्लियर एज टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. These likelihoods are essentially scores. These are not probabilities. These are probabilities.
these and the question, the difference between the question is कि एक case में you're asking about the likelihood of a distribution given data, and in the other you're asking about the probability of data. In this case what is fixed is this, and obviously needless to say these need not sum to 1. These need not sum to 1 because यहाँ पर you are just asking about for a particular distribution, you're just asking about कि ये distribution कितनी likely है given कि ये data मेरे पास आया हो. ठीक है, तो अब ये अपने जहन में है. अगर further इस पर पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, videos देख लें. नहीं तो obviously it's highly recommended you have your own big list of course books, so you can just go there and refer to it further to dive into the more mathematical background of this. But this is at high level, this is what's the difference between your probability and your likelihood. अच्छा जनाब, so now that we are done, अब हमने असल में सिर्फ जानना ये है कि किसी भी एक पॉइंट के लिए हमने ये भी कह दिया ना कि अच्छा ये बाय द वे ये ऊपर जो बनी हुई है ना, ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यूज और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएंसेस के लिए आपके पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस बनी हुई हैं. सो यू सी दिस ब्लू एंड दिस रेड एंड this orange and this green. So these ये इनके different म्यूज हैं, इनके different dispersals हैं जिसके लिए ये ड्रॉ हुई हुई हैं. And now when you want to ask a question like for example यहाँ एक पॉइंट है और मैं जानना चाहता हूँ इस ग्रीन वाले के लिए कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कैसे मैं रीड ऑफ करूँगा. वी यूज़ दिस. सो ये हमारे इस गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं. सो now we are asking about the score, the likelihood of this point x. So let's say this is the point x given this mu and sigma square, which is for example this one. हम इसकी बात कर रहे हैं. तो अगर हम इसकी बात कर रहे हों तो then you just put in these values. This is for your ये it's like a constant multiple जो कि आपकी गाउसियन के लिए आता है हमेशा. And then you have this x is basically this point. So you input the x here and out comes this value and you're done. It's as simple as that. So वो जो आखिरी क्वेश्चन था ना कि अब ये लाइक्लीहुड निकालेंगे कैसे, आएगी कहाँ से, वो बेसिकली आपको सिंपली इस इक्वेशन से मिल जाएगी. ठीक है, ये वही नॉन फेमिलियर गाउसियन की इक्वेशन है जो आपके पास है. एंड यू कैन सी हियर कि if your x is very close to mu, like it's equal to mu for example, तो ये पूरे का पूरा इसका जो एक्सपोनेंट है ये 0 हो जाएगा, which would mean कि it would be e raised to power 0 which would be 1, so it would give a very big number. यानी obviously ये कह रहा होगा कि जो हमारा पॉइंट था, for example जो x है, मैं इसी ग्रीन वाली की बात करता हूँ, अगर वो यहाँ लाई करता हो तो that means कि ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाईली लाइकली है for this x, क्योंकि ये तो इसके म्यू पर लाई कर रही है. यानी सबसे ज़्यादा इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स हैं वो इस जगह पर लाई करते हैं. ठीक है, तो ये दैट मीन्स कि उल्टा सवाल अगर मैं करूँ कि ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन से ये पॉइंट सैम्पल किया गया, ये चीज़ कितनी लाइकली है, ये बहुत हाईली लाइकली है. वेयर एज कि अगर मेरा जो है वो एक्स यहाँ पर है कहीं, तो नाउ फॉर दिस ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज़ वेरी अनलाइकली कि ये इस डिस्ट्रीब्यूशन से आया होगा. ठीक है, it's very unlikely. So in that case there would be a big difference here, and then this would lead to a small number because e raised to power a big number, so basically that would be 1 over e raised to power a big number, it would lead to a very small number. ठीक है जी, clear हो गया. And this is how you're actually going to compare distributions. जैसे अभी हम पिछले वाले में देख कर आए हैं ना, तो ये अब आपकी comparison यहाँ पर आपको होता नजर आ रहा है. Again आप यही equation use करेंगे अपनी values find करने के लिए. So for a given data point, for example ये x है, तो इस blue और red वाली दोनों जो distributions हैं जो अपने अपने mu और अपने अपने sigma से define हुई हुई हैं, उन दोनों से आपने इसका score पूछ लिया और सॉरी उस स्क्वायर को आपने कंपेयर, उस स्कोर को आपने कंपेयर किया और आपको पता लगा जी ये स्कोर हाई है, तो दैट मीन्स द रेड वन इज मोर लाइकली टू बी द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच दिस पॉइंट एक्स हैज बीन सैंपल्ड. ठीक है जी, ये क्लियर है, ये जहन में सब कुछ क्लियर हो गया. सो नाउ लेट्स लुक एट वन कंक्रीट एग्जांपल टू फिनिश दिस. अच्छा जनाब, हम इस एग्जाम्पल को बेसिकली यूज़ कर रहे हैं अगेन ये स्टैट क्वेस्ट से, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑल ऑफ द डिटेल्स आर इसेंशली द सेम. Again highly recommended that you should just go and watch the actual video as well, but here we'll just go over a simple version of it and see के पूरे का पूरा ये Gaussian knife based जो है ये चलता किस तरह से. By the way there would be probably some details here जो कि वहाँ पर नहीं होंगी, so it's better that you watch at least this definitely, and then in addition to this अगर टाइम है तो वो भी देख लीजिएगा. Okay, so you predict
you predict if a particular person likes the movie, and we're giving the name of a movie here, like Terminator 2. I've just given it the name Machine Learner 2. So that's you probably. So think of yourself. आप जो कोई भी हैं, आप अपने आप को इस movie के hero या heroine समझ लें. So and then and now you want to predict किसी भी एक randomly selected individual के लिए कि उसे ये movie पसंद है या नहीं. And what you do is कि you collect data for a lot of people, जिनमें से कुछ को जो है वो ये मूवी पसंद है ML2 मशीन लर्नर 2, और कुछ को ये मूवी नहीं पसंद, और आप उनके लिए कुछ कुछ फीचर्स डिफाइन करते हैं और डेटा कलेक्ट कर लेते हैं. सो लेट्स से हमने जो 3 फीचर्स डिफाइन किए हैं वो ये वाले. हमारा ख्याल है कि जी ये इन फीचर से पता लग जाता है कि इस शख्स को ये मूवी पसंद है या नहीं है. सो द फर्स्ट फीचर इज अमाउंट ऑफ पॉपकॉर्न कंज्यूम. ये मतलब मूवी खाते हुए लेट्स से पॉपकॉर्न खाते हैं, मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाते हैं. एंड देन अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, आई यूज द वर्ड गजल्ड. तो बहुत ज़्यादा पीते हैं ऑब्वियसली जब मूवी देख रहे होते हैं. तो लेट्स से आप कितनी आप पेप्सी पी रहे थे या कोक पी रहे थे, व्हाटएवर. एंड देन आप कितनी कैंडी कंज्यूम कर रहे थे मूवी देखते हुए. सो लेट्स से दीज आर आर 3 फीचर्स. तो हमने अपना पूरा एक ट्रेनिंग डेटा का सेट लिया. कुछ लोग को ये मूवी पसंद थी, लेबल लगा हुआ है. कुछ को मूवी नहीं पसंद. सबके लिए हमने जमा कर लिया कि भाई आप लेट्स से एवरेज नंबर या टोटल नंबर या जो भी किसी तरह से भी आपने फिगर आउट कर लिया कि उन्होंने पॉपकॉर्न कितना खाया, उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक कितना पिया, उन्होंने कैंडी कितनी कंज्यूम की. ठीक है, मैं इन फीचर्स को इससे ज़्यादा प्रिसाइज नहीं कर रहा बिकॉज ज़रूरत नहीं है. मतलब इसको आप एवरेज भी कह सकते हैं, एवरेज पर मूवी सेशन भी कह सकते हैं, व्हाटएवर. So these are the tables हमारे पास ये. and because all of these are real valued features, so for example ये हमारे पास जो हैं ये पॉपकॉर्न कंजम्पशन के हैं. 8 हमारे पास लेट से इंडिविजुअल थे. टोटल हमारे पास 16 इंडिविजुअल्स हैं. उनमें से जो हैं वो 8 ऐसे हैं जिन्हें ये मूवी पसंद है और 8 ऐसे हैं जिन्हें ये मूवी नहीं पसंद. सब के लिए हमने सो फॉर एग्जांपल पॉपकॉर्न ये खा रहे हैं वो लोग जो जिनको नहीं पसंद, और ऊपर वाले हैं जिनको पसंद है. एंड देन इसका एवरेज हमारे पास म्यू और सिग्मा इतना आया, इसका म्यू और सिग्मा इतना आया. बाय द वे यहीं से लग रहा है कि पॉपकॉर्न एक अच्छा फीचर है जिससे कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है. सिमिलरली सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो भी एक इंटरेस्टिंग फीचर लग रहा है. एंड देन कैंडी जो है दैट प्रॉब्ली इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फीचर बट इन द रिवर्स डायरेक्शन. खैर, अब आपने ये सब कुछ लिया. एंड नाउ व्हाट यू डू इज यू बेसिकली यूजिंग दीज म्यूज एंड सिग्मास यू प्लॉट these distributions. So अब आप ये करते हैं कि अपने नॉर्मल्स को आप प्लॉट कर देते हैं. So these are the plots for the people who like the movie ML2. So let's say ये जो पहला वाला है पॉपकॉर्न के केस में, so आपका म्यू जो है यहाँ पर है कहीं. So this is your 24 mark, 24 liters mark, or sorry, popcorn, so 24 gram mark. And this is, let's say, it is your 400 ml mark. Let's say this is your 400 ml mark for your soft drink. And similarly for your candy, this is your um, this is your 5 gram mark. Okay, this is your 24 gram mark for the popcorn. All right, so ये हमारे पास distributions plot हो गई जो कि हैं for people who like this movie. And then you plot the distributions जो कि for people who do not like this movie. ठीक है जी. इनको भी अगर हम यहाँ पर देखें तो this is essentially, I'll just rub these off, लेकिन सिर्फ आपको एक दफ़ा क्लियर करने के लिए हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. I'm just plotting this real quick. So for this is the mu is 5 grams. For this is people who don't like, so this is a small number, so let's say 200 ml. And here we have your 25 gram mark. ठीक है जनाब. सो ये हमारी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास प्लॉट होकर आ गई. All right, so now for a person, for our test data point, we get our test data point, let's say x, and we have all of these 3 features defined for that x. ये तीनों चीज़ें हमने उसकी मालूम कर ली कि वो पॉपकॉर्न कितना कंज्यूम करता है, वो सॉफ्ट ड्रिंक कितना पीता है, और वो कैंडी कितनी खाता है. सो लेट्स से वी फाइंड कि वो 20 ग्राम जो है वो पॉपकॉर्न कंज्यूम करता है, वो 500 ml जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करता है, और वो लेट्स से 25 ग्राम जो है वो कंज्यूम करता है कैंडी. ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई. नाउ ऑल वी नीड टू डू इज बेसिकली फिगर आउट हाउ लाइकली इज this distribution versus this distribution for this test data point, and we do this separately for all the features
and we know that because in naive Bayes हमारे फीचर्स आपस में इंडिपेंडेंट कंसिडर होते हैं, इन फीचर्स का आपस में कोई हम कोरिलेशन नहीं देख रहे होते, कोई कोवेरियंस नहीं देख रहे होते, दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट इंडिविजुअली फिगर आउट द लाइक्लीहुड्स फॉर बोथ ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड देन कंपेयर एंड फिगर आउट कि ज़्यादा लाइकली कौन से वाले से आ रहा है. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. सो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रायर्स. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रायर फॉर लव्स ML2 इज बेसिकली 8 लोगों को पसंद थी ML2, 16 में से तो 0.5 आया, बहुत बैलेंस्ड प्रायर आ गया. एंड नाउ टू फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी दैट your test data loves the movie ML2. So the probability of loves ML2 given your test data point is equal to the prior of loves ML2 multiplied by these three likelihoods. And how would you calculate these three likelihoods? अभी हम loves वाले के केस में ढूंढ रहे हैं, तो ये कैसे निकलेगी? This will be simply this and ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यू कैन एज्यूम कि ये चल रही है. सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन ये ऑब्वियसली स्मॉल, वेरी स्मॉल नॉन जीरो वैल्यू के साथ ये चलती रहती हैं. सो यू फिगर आउट दीज थ्री वैल्यूज, सो यू विल रीड इट ऑफ फ्रॉम. So once and to find out these values you use this. So you just put in your xi. So for example पहले वाले के केस के अंदर you know your mu, you know your sigma, and you know your xi which is 20. So you just put it in there and you just read this off here. ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या निकल रही हैं? लेट्स एज्यूम ये एग्जांपल वैल्यूज बस लिखी हुई हैं. सो 0.5 आपका ये प्रायर है, एंड देन दिस इज फॉर द पॉपकॉर्न, दिस इज फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक, एंड दिस इज द वेरी वेरी स्मॉल नंबर दैट यू गेट हियर फॉर द कैंडी. ठीक है, you multiply this and you get this very small number. ठीक है, now you repeat the same for the individuals who do not like the movie ML2. So you take your prior which is the same 0.5, and then you figure out that the probability of not loving ML2 given this individual X क्या है, और इसकी अब उसी तरह से you have your prior and you take your likelihoods for all the three distributions. Once again now you want to do this with the red one. तो हमें मालूम है कि ये रेड वन यहाँ जाकर कोई बहुत लो सी वैल्यू रख रही है, यहाँ पे ये बहुत लो सी वैल्यू रख रही है, एंड यहाँ पर दिस एक्चुअली हैज़ अ प्रीटी high value. So we read this off from here, very small number. You read this off from here, a very small number. So you find out the first one is 0.000088. The second one is this. The third one is this. You figure this out and you get the outcome. And interestingly, this second outcome turns out to be higher than the first outcome. And you say at this point that this is the more likely सिनारियो. दिस इज द मोर, इन दोनों के जो आग मैक्स होगा वो आग मैक्स आपके पास आ रहा है वेयर दी योर आग मैक्स इज द वन. वो वाली इनपुट आपकी जो ज़्यादा बेहतर है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ये कह रही है कि दे डू नॉट लाइक द मूवी ML2. So you call that the winner and you say that okay, this new individual who eats 20 grams of popcorn, drinks 500 ml of soft drink and eats 25 grams of candy does not like the movie ML2. ठीक है जी, तो ये बिल्कुल उसी तरह की सिंपल एग्जांपल है जैसे हमने स्पैम के केस में की थी. आई होप इट इज़ क्लियर. आई होप कि यहाँ तक आकर अब आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी.